Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. On Prime Minister Narendra Modi's visit to Bihar, Lok Janshakti Party Ram Vilas MP Arun Bharti stated that the PM has consistently kept Bihar on the agenda for development. He emphasized that the Prime Minister has been fulfilling the promises made to the people of Bihar one by one. As part of this commitment, he added PM Modi is coming to inaugurate the new terminal building of the Patna airport. जी ने लगातार जिस तरह से बिहार को विकास में अपने एजेंडे में रख रखा है और लगातार बिहार में जिस तरह से उन्होंने जो वादे किए थे उसको एक एक करके पूरा करने का जो उनका दायित्व निभा रहे हैं, इसी सिलसिले में एक सबसे पहले पटना का जो हवाई अड्डा है जो नया बना है, उनको ये उनका परिसर नया हवाई अड्डा बना है उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। और उसके बाद विक्रमगंज में 28,000 करोड़ से एनटीपीसी का प्लांट बना है, उसका भी उद्घाटन है। और इसके साथ साथ विकास के और भी सौगात प्रधानमंत्री जी उस वक्त वहां पर बिहार को दे करके जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी के नेता चिराग पासवान जी, जिन्होंने तुरंत ही अभी एक बहुत बड़ा बायर सेलर मीट भी पटना में किया था, जिसका कि बहुत ही व्यापक सफलता रहा है। और बहुत सारे लोग बिहार से सामान खरीद करके, फूड प्रोसेसिंग का सामान खरीद करके अपने अपने देशों में ले जाना चाह रहे हैं। एक व्यापक सफलता रही है उसकी। इसी के मद्देनजर क्योंकि तीनों लोगों की ताकत है, उन्होंने बिहार में विकास की गति के लिए डबल इंजन की सरकार ने इन सौगातों को दिया है और आगे आने वाले भविष्य के लिए भी और योजनाओं का वहां पे घोषणा करेंगे। देखिए, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, विकास का जो अपना है रफ्तार वो हमेशा रहेगा। आप ये देखिए कि सिर्फ एक चुनाव के लिए, एक राज्य में चुनाव के लिए क्या प्रधानमंत्री आकर के इस तरह से अपना समय, क्योंकि उनका समय बहुत कीमती है, योजनाएं देने का काम करना या किसी से शिलान्यास करना, ये सिर्फ नहीं करेंगे। वो बिहार पूरे भारत के समग्र विकास के लिए जिस तरह से प्रयत्नशील है, एक विकसित भारत का जो उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, ये सब उसी के अंदर है। इसको चुनावों से जोड़ने का कोई फायदा नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लगातार जिस तरह से बिहार को विकास में अपने एजेंडे में रख रखा है। Regarding the fee hike by private schools, Advocate Kamal Gupta stated the petition today was filed by some parents and two parent associations. They argued that the issue of prior approval has not been consistently decided by the High Court, so the Supreme Court should decide on it. The Supreme Court refused to grant a stay but has issued a notice on the petition. आज जो पिटीशन थी वो कुछ पेरेंट्स ने, दो एसोसिएशन थी पेरेंट्स की, उन्होंने लगाई थी कि जो ये प्रायर अप्रूवल का इशू है ये हाई कोर्ट ने हमें बार बार डिसाइड नहीं किया है, तो इसलिए ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है इस पिटीशन पे। हमारा कहना ये था स्कूल्स की तरफ से कि ये मैटर सिंगल जज और डिवीजन बेंच हाई कोर्ट की दोनों के यहाँ पेंडिंग है, तो उनको पहले डिसाइड करने दिया जाए, तो इस बात पे अगली बार सुनवाई होगी। आज जो पिटीशन थी वो कुछ पेरेंट्स ने, दो एसोसिएशन थी पेरेंट्स की, उन्होंने लगाई थी कि जो ये प्रायर अप्रूवल का इशू है ये हाई कोर्ट ने हमें बार बार डिसाइड नहीं किया है, तो इसलिए ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है इस पिटीशन पे। हमारा कहना ये था स्कूल्स की तरफ से कि ये मैटर सिंगल जज और डिवीजन बेंच हाई कोर्ट की दोनों के यहाँ पेंडिंग है, तो उनको पहले डिसाइड करने दिया जाए, तो इस बात पे अगली बार सुनवाई होगी। आज जो पिटीशन थी वो कुछ पेरेंट्स ने, दो एसोसिएशन थी पेरेंट्स की, उन्होंने लगाई थी कि जो ये प्रायर अप्रूवल का इशू है ये हाई कोर्ट ने हमें बार बार डिसाइड नहीं किया है, तो इसलिए ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने Hitting out at the Congress, Haryana Minister Anil Vij said Congress sees every right thing as wrong. This is their culture. Due to being repeatedly rejected by the public across states and the country, their thinking and understanding have deteriorated and they are unable to recognize what is right. कांग्रेस को हर ठीक बात गलत नजर आती है। कांग्रेस का कल्चर ही ऐसा है और लगातार हर प्रदेश में, देश में बार बार जनता द्वारा
नकार दिए जाने के कारण इनकी सोच समझ खत्म हो चुकी है। ये ठीक को ठीक नहीं कह सकते और कांग्रेस को हर ठीक बात गलत नजर आती है। कांग्रेस का कल्चर ही ऐसा है और लगातार हर प्रदेश में देश में बार बार जनता द्वारा नकार दिए जाने के कारण इनकी सोच समझ खत्म हो चुकी है। ये ठीक को ठीक नहीं कह सकते और कांग्रेस को हर ठीक बात गलत नजर आती है। कांग्रेस का कल्चर ही ऐसा है और लगातार हर प्रदेश में देश में बार बार जनता In Bihar, ahead of the Prime Minister Narendra Modi's visit, the Union Minister Giriraj Singh said that the Yagna of Ma Lalita is underway and the Prime Minister Narendra Modi is arriving. The worship being performed is dedicated to Ma Lalita. Operation Sindoor, launched by PM Modi, completely defeated the enemies on all fronts. There has been no such operation anywhere else in the world. मां ललिता का यज्ञ हो रहा है और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और ये माता जो पूजा कर रही हैं ललिता माता की, ये ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने चलाया, जिससे दुश्मन चारों खाना चित्त हो गए। पूरी दुनिया में वैसा ऑपरेशन नहीं हुआ था, वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आज मोदी जी के आगमन पर 26 तारीख से आज तक चलेगा, कल इसका समापन होगा। सभी माँ बंधु जितनी माताएं आई हैं मोदी जी के लिए आशीर्वाद दे रही हैं। यही है आज दादी माँ के मंदिर में माँ ललिता का ये यज्ञ का। देखिए मोदी जी, मैं पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूँ, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। ये कुछ पागल लोग पूछते हैं मोदी जी काहे आते हैं। अरे मोदी जी आते हैं बिहार के विकास के लिए। मोदी जी आते हैं कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं होगा। जब से मोदी जी डबल इंजन की सरकार लगी है, मोदी जी और नीतीश कुमार, आज देखिए 50,000 करोड़ का है। नबीनगर में सुपर प्लांट बैठेगा, यहाँ एयरपोर्ट का हो रहा है, सड़क का हो रहा है, पुल का हो रहा है। ये विकास तो इसी को कहते हैं। लालू जी को एगो गाड़ी पर बैठा लीजिए, पहले खट 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 करते हुए बक्सर जाते थे, 5 घंटा में पहुंचते थे, अब 1.5 घंटा 2 घंटा में पहुंचते हैं। मैं बेगूसराय से 1.5 घंटा में पटना आता हूं, गया से 1.25 घंटा और 1.5 घंटा में लोग आ रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि विकास कहाँ है, उनको चश्मा बदल लेनी चाहिए। वो देखें मोदी जी आते हैं, जितना बार आते हैं बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होता है। देखिए यह यज्ञ Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan, speaking from Jagannath Puri, said the prasadam of Lord Jagannath spreads blessings far and wide. May there be no shortage of wealth and grains by the grace of Lord Jagannath. Continuous efforts are underway under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to ensure this. Today at Jagannath Puri, I am happy to share that due to the hard work of farmers and the policies for agriculture and farmer welfare under PM Narendra Modi's leadership, the country's food reserves are abundant. भगवान जगन्नाथ के, बलदाऊ भैया के, सुभद्रा भैया के यहाँ पे दर्शन किए। विमला देवी, लक्ष्मी माँ, सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ।
धन धान्य की कोई कमी ना रहे भगवान जगन्नाथ की कृपा से। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयास चल रहा है। आज जगन्नाथपुरी में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के परिश्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण की नीतियों के कारण आज देश का खाद्यान्न का भंडार भरपूर है। गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। लेकिन आज भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कृषि विभाग पूरे देश का, भारत का, हमारे उप मुख्यमंत्री जी साथ हैं, उड़ीसा का कृषि विभाग, भारत के कृषि वैज्ञानिक जो 16,000 की संख्या में है, अब लैब में नहीं बैठेंगे, आज लैब से लैंड की तरफ जाएंगे। मतलब गांव में किसानों के पास जाएंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान आज पुरी की इस पवित्र धरा से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें वैज्ञानिक गांव में जाके किसानों को वहां की जलवायु कैसी है, वहां कितना पानी है, माटी कैसी है, उसके अनुरूप कौन सी फसल की कौन सी किस्म और कैसे खेती करनी चाहिए, जो उन्होंने शोध और अनुसंधान किए हैं, रिसर्च किए, उसके अनुसार किसानों को सलाह देंगे। किसान भी उनसे सवाल पूछेंगे, समस्याएं बताएंगे। उनकी बताई समस्याओं के आधार पर फिर जरूरत पड़ी तो शोध, रिसर्च और अनुसंधान भी होंगे। आज भगवान के चरणों में यही प्रार्थना की है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान हमारा सफल हो, विज्ञान, वैज्ञानिक और किसान मिलकर एक हो जाएं, एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम के लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हम सब साथी राज्यों के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, उप मुख्यमंत्री, कृषि विभाग का अमला, वैज्ञानिक, किसान, ये एक टीम बन गए। संकल्प है किसान का उत्पादन बढ़ाना। भगवान जगन्नाथ के, बलदाऊ भैया के, सुभद्रा मैया के यहाँ पे दर्शन किए। विमला देवी, लक्ष्मी माँ, सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। जगन्नाथ का भात, जगत पसारे हाथ। धन धान्य की कोई कमी ना रहे भगवान जगन्नाथ की कृपा से। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयास चल रहा है। आज जगन्नाथपुरी में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के परिश्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण की नीतियों के कारण आज देश का। Well, let's take a short break. అందరికీ నమస్కారం. జూన్ 21వ తేదీ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ సందర్భంగా మనందరం కార్తీక మాసం, ధనుర్మాసం లాగా జూన్ మాసాన్ని యోగా మాసంగా గుర్తించి నెలంతా శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవటానికి నిజ జీవితంలో యోగాను ఒక భాగంగా చేసుకుని అందరూ ఆచరించాలని మన ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు మరియు ఆంధ్రాను యోగాంధ్రగా మార్చాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంటింటికి యోగా చేరాలని సంకల్పించారు. ఇందులో భాగంగా ఇంటింటికి యోగా కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు భుజంగాసన్ విశేషత తెలుసుకుందాం. పాము పడగ లేపి ఆపినట్లుగా మన శరీరాన్ని బొడ్డు నుంచి తలభాగం వరకు పాము పడగవలే లేపి ఆపి ఉంచే ఆసనం కాబట్టి భుజంగాసన అని అట్లా పేరు పెట్టడం జరిగింది.
ముఖ్యంగానండి ఈ భుజంగాసన వల్ల మెడనొప్పి ఉన్నవారు తగ్గించుకోవటానికి, అలాగే లేనివారి జీవితంలో రాకుండా చేసుకోవటానికి అద్భుతమైన ఆసనం భుజంగాసనం. అట్లాగే నడునొప్పి ఉన్నవారికి నడునొప్పి తగ్గటానికి, లేనివారు రాకుండా చేసుకోవటానికి ఇది మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. పిల్లల దగ్గర నుంచి ముసలివారి వరకు అందరికీ మెడ నడుము సమస్యలు ఉంటున్నాయి. బ్యాక్ మజిల్ స్టిఫ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దాన్ని తగ్గించుకోవటానికి బోర్లా పడుకుని సులభంగా చేయగలిగేది కదా. థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉన్నవారికి థైరాయిడ్ సమస్య తగ్గించుకోవటానికి, లేని వారికి థైరాయిడ్ గ్రంథి బాగా పనిచేసి భవిష్యత్తులో హార్మోన్ లోపం రాకుండా ఉండటానికి ఈ భుజంగాసన అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. ఇలాంటి ఇన్ని లాభాలు కలిగించే భుజంగాసన్ని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. భుజంగాసన చేసే విధానం ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం. బోర్లా మనం అట్లా పడుకున్న తర్వాత 2 కాళ్ళను కలిపేసి అలా చాపేస్తాం. 2 చేతులను కూడా ముందుకు అట్లా చాపేస్తాం. తర్వాత 2 చేతుల్ని వెనక్కి తీసుకొచ్చి నాభికి ఇరువైపులా చూడండి అరిచేతులను అట్లా ఆనిచ్చేసేసి, ఆ తర్వాత 2 మోక చేతుల్ని లోపలికి నొక్కుకోవాలి. లోపలికి మోక చేతులు నొక్కున్నాక చూడండి గాలిని పీలుస్తూ నేల నుంచి తల, మెడ, నడుమన్నీ అట్లా లేపి వెనక్కి విరుస్తాం. ఇది భుజంగాసనం. కాళ్ళు చాపేసి అట్లా ఉంటాయి. పాము పడగలేపినట్టుగా మన శరీరాన్ని అలా లేపి ఉంచుతాం అన్నమాట. ఈ భుజంగాసనలు అట్లాగే ఉండటం వల్ల ఫలితం బాగా వస్తుంది. ఎక్కువసేపు ఉంటే మెడ నొప్పులు, నడు నొప్పులు ఉన్న వారికి చాలా మంచిది. కాస్త వీపు భాగంలో కొవ్వు ఉన్న వారికి కూడా ఈ భుజంగాసనేసి అదే భంగిమలో కలుపుకొని ఉంటే కొవ్వు కూడా బాగా కరుగుతుందన్నమాట. నడువు నొప్పులు లేని వారికి ఇలాగే భుజంగాసనం వేయటం వల్ల వంగి ముందు కూర్చున్నప్పుడు చేసే పనుల వల్ల వచ్చిన ఒత్తిడంతా పోయి చాలా చక్కటి ఫలితం నడుములో వచ్చి భవిష్యత్తులో ఎన్ని గంటలు కూర్చుని పని చేసినా నడువు నొప్పులు రాకుండా ఉంటాయన్నమాట. ఇక ఉండలేనప్పుడు మెల్లగా తీసేస్తారు. గాలిని పీల్చుకుంటూ మెల్లగా తింపేస్తారు. ఇక హాయిగా బోర్లా పడుకుని అట్లా రిలాక్సేషన్, విశ్రాంతి స్థితి. నడువు నొప్పులు, మెడ నొప్పులు ఉన్నవారు రిలాక్స్ అయ్యాక మళ్ళీ ఇంకోసారి 2 సార్లు అట్లా రిపీట్ చేసుకోవడం చాలా మంచిదన్నమాట. కొంతమందికి మెడ నొప్పి, నడువు నొప్పి తీవ్రంగా ఉన్నవారు ఇట్లా చేతులు సగం యాంగిల్ లాగా వచ్చేటట్టు పెట్టి ఆపలేనప్పుడు చేతులను కాస్త స్ట్రైట్గా పెట్టి భుజంగాసన చేస్తే కొద్దిగా సులభంగా చేయగలుగుతారు. క్రమేపీ ఆ చేతులు బెండ్ అయ్యే యాంగిల్లో బొడ్డు దగ్గర నుంచి నడువునట్లా వెనక్కి లేపి ఉంచితే ఫలితం ఇంకా బాగా ఉంటుంది. వీపు భాగం కొవ్వు కరగటానికి కూడా ఈ భుజంగాసన మంచిగా పనికొస్తుంది అన్నమాట. కాబట్టి ఉద్యోగ వ్యాపారాలు చేసుకునేవారు, చదువుకునే వయసులో పిల్లలు ప్రివెన్షన్గా మీరు 10 గంటలు అక్కడ వర్క్ చేయాలి అంటే, చదవాలి అంటే కూడా మీ స్పైన్ని, మెడ భాగాన్ని హెల్దీగా చేసుకోవటానికి ఈ భుజంగాసన మానకండి. నమస్కారం. Welcome back. In Raebareli, Uttar Pradesh, SP Sanjeev Kumar Sinha stated a case was registered at Atanga DI under FIR number 74/25 involving sections 419, 468, 467 and 566 of the IT Act concerning cyber fraud. 5 accused have been taken into judicial custody and sent to jail. The district police had earlier uncovered how these individuals amassed money through lottery scams and other fraudulent schemes. The investigation is ongoing and all those found involved will be arrested and prosecuted accordingly. On Prime Minister Narendra Modi's visit to Bihar, Lok Janshakti Party Ram Vilas MP Arun Bharti stated that the PM has consistently kept Bihar on the agenda for development. He emphasized that the Prime Minister has been fulfilling the promises made to the people of Bihar one by one.
As part of this commitment, he added PM Modi is coming to inaugurate the new terminal building of the Patna airport. ने लगातार जिस तरह से बिहार को विकास में अपने एजेंडे में रख रखा है और लगातार बिहार में जिस तरह से उन्होंने जो वादे किए थे उसको एक एक करके पूरा करने का जो उनका दायित्व निभा रहे हैं, इसी सिलसिले में एक सबसे पहले पटना का जो हवाई अड्डा है, जो नया बना है, ये उनका परिसर नया हवाई अड्डा बना है, उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। और उसके बाद विक्रमगंज में 28,000 करोड़ से एनटीपीसी का प्लान बना है, उसका भी उद्घाटन है। और इसके साथ साथ विकास के और भी सौगात प्रधानमंत्री जी उस वक्त वहाँ पर बिहार को दे करके जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी के नेता चिराग पासवान जी, जिन्होंने तुरंत ही अभी एक बहुत बड़ा बायर सेलर मीट भी पटना में किया था, जिसका कि बहुत ही व्यापक सफलता रहा है। और बहुत सारे लोग बिहार से सामान खरीद करके, फूड प्रोसेसिंग का सामान खरीद करके अपने अपने देशों में ले जाना चाह रहे हैं। एक व्यापक सफलता रही है उसकी। इसी के मद्देनजर क्योंकि तीनों लोगों की ताकत है, उन्होंने बिहार में विकास की गति के लिए डबल इंजन की सरकार ने इन सौगातों को दिया है। और आगे आने वाले भविष्य In Balia, Uttar Pradesh, a teacher was arrested in a police station area for allegedly luring and kidnapping his minor student from another community with the intent to marry her. The girl had been missing for 4 to 5 days, causing outrage among several organizations. Police have now arrested the accused and successfully recovered the minor girl. मासडी में एक इंटरफेथ एलोपमेंट का प्रकरण आया था, जिसमें एक समुदाय का तथाकथित अध्यापक दूसरे समुदाय की एक नाबालिग बालिका को लेके 4-5 दिन से गायब था, जिसके कारण विभिन्न संगठनों के द्वारा रोष भी व्यक्त किया गया था। इसमें बासडी पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर इन दोनों को, उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बालिका की बरामदगी की गई है, नियमानुसार उसमें कार्रवाई कराई जा रही है। मासडी में एक इंटरफेथ एलोपमेंट का प्रकरण आया था, जिसमें एक समुदाय का In Gujarat, Anmol Sharma was attacked by 2 men after he allegedly terrorized locals by brandishing a sword in a public area. The incident, captured on video, quickly went viral and exposed the Sharma's antisocial behavior. Police responded swiftly, arresting the attackers, while Sharma is currently undergoing treatment at a hospital. वापी टाउन पुलिस स्टेशन के भड़कमुरा एरिया में 2 इसमों ने एक इसम को बेरहमी से मारा था। जैसे ही वापी टाउन पुलिस को जानकारी मिली, वापी टाउन पुलिस ने तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर की। जो मारने वाले लोग थे वो मौके से भाग गए थे। वापी पुलिस ने अलग अलग टीम बना के जो मारने वाले 2 लोग थे उन दोनों को अरेस्ट कर लिया है। अभी उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनका रिमांड लेने की कार्यवाही चालू में। सही में ये घटना क्यों हुई है, कैसे हुई है और ये घटना में कौन कौन शामिल है, उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी वापी टाउन पुलिस कर रही है। जो आरोपी है वो उसी एरिया के रहने वाले हैं। एक का नाम प्रवीण पटेल है और दूसरे का नाम चेतन पटेल है। वापी टाउन पुलिस स्टेशन के भड़कमुरा एरिया में 2 In West Bengal, about 22-25 kilograms of seized raw gunpowder stored near a pond behind the Diamond Harbour police station accidentally caught fire, leading to a blast. Fortunately, there were no casualties or property damage reported. The fire brigade responded promptly and successfully extinguished the fire.
Shiv Sena UBT MP Priyanka Chaturvedi, part of Group 2 of the all-party delegation led by BJP MP Ravi Shankar Prasad, emphasized a united front against terrorism. During an international mission, she stated, as members of parliament, particularly me from a party that is opposed to the government back home, we stand united against the repeated terror acts carried out by Pakistan. We are all here on a mission to make nations across the world understand the threat of terrorism and how it continues to impact the lives of not just Indians but civilians worldwide. We as members of parliament, me being particularly from a party which is opposed to the government back home, we stand united against the terror act carried out repeatedly by Pakistan repeatedly, and we are all here on a mission to get all the nations across the world to understand the threat of terrorism and how terrorism continues to impact the lives of not just Indians but civilians across the world. So we are here on a mission to also ask the European nations, the US and various other countries that there has to be a rise in the cost of terrorism and hold Pakistan to account for what they do, the terror that they spread across the world. Oh, absolutely. We are all asking and we are talking about it that if we need to bring terrorism to an end, we want to put an end to the terror attack emanating from Pakistan, we will need to hold them to account. We will need to put them back in the grey list of FATF so that the money that they get across the world through loans, through support, is not used for terror activities, not used to defend terror camps, not used by the Pakistani army to weaponize terrorists and spread terror across the world. We as members of parliament, me being particularly from a party which is opposed to the government back home, we stand united against the terror act carried out repeatedly by Pakistan repeatedly, and we are all here on a mission to get all the nations across the world to understand the threat of terrorism and how terrorism continues to impact the lives of not just Indians but civilians across the world. So we are here on a mission to also ask the European nations, the US and various other countries that there has to be a rise in the cost of Well, that's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.